So back after a long time, and so many things have occurred during this time, so I could not get the time to upload any video or give myself the time for uploading the video. But today I've decided that I'll continue this, and today I'm going to tell you my story, how these things have happened, what have happened during this time. So finally, I am now posted at KV Kuch Bihar, Kendriya Vidyalaya Kuch Bihar. After a long struggle, you can say, and after a long time also, after a long time of, because it was the time when I was very impatient sometimes, and but also I had the hopes. बट ये कहा जाता है कि जिस चीज़ को तुम अच्छे से चाहोगे तो वो तो पाना ही है. So let me tell you my story in today's video. So you know that I come from a very middle class background, and basically I started this or I made this ambition that I have to do something in my life. So I had always the ambition that I'll do or I'll do the job of a teacher, because so many teachers have inspired me and I know that I can do it very well. So my advice to you is that जो भी चीज़ तुम अच्छे से चाहोगे, मतलब जिस चीज़ को तुम अच्छे से कर सकते हो, उसको ही लेके आगे बढ़ो. So it was the time when after I graduated and after I did my masters, then you know the situation, what is the situation right now. So from that time, after I got my B.Ed degree, I started involving myself in different teaching activities. Like I joined a school since that time in 2000. It was the year 2019, and since that time I have been working in different schools, and this is the fifth school that I have been working now. So you know that so much of experience I have gathered, and one thing is very clear, that in all my career, whether it is my academic career or my professional career, तो जो जो चीज़ एकेडमिक करियर से मिला है मुझे, बाद में जाके जब प्रोफेशनल करियर में मैं एंट्री लिया, एंड आफ्टर दैट टाइम आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स. और जो जो चीज़ मैं एकदम पहले शुरुआत में सीखा था, लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ वेरी स्मॉल प्राइवेट स्कूल, इट वाज द फर्स्ट beginning you can see in my professional career. So at that time I also had some hopes, but I always did my job very well, कि मुझे मेरा ये काम है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यही मुझे आगे लेके जाएगा. बहुत कुछ सीख लेना है, जितना कुछ सीखोगे, बिकॉज यू लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ ऑल थ्रू माई एकेडमिक और माई प्रोफेशनल कैरियर. तो आज भी मैं सीखता हूँ. आज in 2023 I was posted, so this was a very good, really good news for me and for my family. But it has been a long struggle, because when it was the time of 2019 and it was the time of COVID also, so many people also lost their hopes. There was not much hope. But at that time I joined a school, and that was completely in online mode. Okay. And but I learned, and I prepared so many videos, and I prepared also so many PPTs for the school. So I learned so many things, digital things you can say. And I thought that I can also invest myself in different learning platforms. So I started my own coaching, you can say, although it was very small coaching, but I started my own coaching. And I invested myself in YouTube, so that, because as I already said, that learning has always been the center. Okay. So I always learn. Even today, when I go to school, when I go to my class, I tell my students that I always learn from you also, my students. Okay. So my belief is that you have to learn always. So after 2019, when I was in the school, and then it was 1 year I completed, and then I shifted myself to Navodaya Vidyalaya. So it was although a contextual appointment, but I received it. Okay. So I accepted all the challenges that came before me. तो मेरे सामने जो जो challenges आने लगा, जो जो opportunities आने लगा साथ साथ, I accepted that, because I believe that challenges जो आएगा, opportunities जो आएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. Correct. So I learned from there also, and that gave me that perfect, you can say that perfect platform, or the perfect environment or the scenario. From there also I learned so many things, and from that time ये मुझे विश्वास हो गया था कि ऐसा कुछ काम करना है. मतलब इसी टाइम में जब जॉब का क्राइसिस है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ जॉब आल्सो इन आवर स्टेट, बेसिकली इन वेस्ट बंगाल, एंड आल्सो इन द कंट्री वर्ल्ड, इन द कंट्री आल्सो, बिकॉज यू फाइंड दैट नॉट मेनी टीचिंग वैकेंसीज आर देयर. करेक्ट. ईयर वाइज. सो 2019 से लेके एकदम आज तक, मतलब 2023 तक, आई हैव वर्कड इन डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स. आई डू नॉट से दैट प्राइवेट स्कूल्स
are very bad. Of course not. They are also very good. They also give you some learning experiences and you explore every time. और बहुत कोई लोग बोलता है कि देयर so much of pressure, you cannot handle the other things, but I tell you that you can handle. So टाइम जो होते हैं वो तुम्हें खुद मैनेज करना होगा. ओके, टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना होगा, बिकॉज टाइम इज़ ऑलवेज फ्लीटिंग. तो एक इंस्टीट्यूशन में जब ज्वाइन किया मैं, आफ्टर दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट टाइम मेरे पास है बट लिमिटेड है. So after that time, I always kept myself busy in different things. Okay, although of course they are very productive things, very fruitful things, but I always kept myself very busy in these things. Okay, like in the making YouTube videos, as you know, that making educational videos, and I also write on my blog. So there's a blog. I will give the link on the description box. Okay, in the description box. So I write here, and I always invested myself. तो ये होते होते बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने लगा. एंड आफ्टर दैट टाइम आई अंडरस्टूड दैट आप तो इसके बाद ऐसा कुछ करना है इसी टाइम के अंदर, जो होगा इसी 2-3 साल के अंदर ही कर लेना है. बिकॉज आफ्टर दैट टाइम यू नो दैट पीपल लूज एनर्जी, पीपल ऑल्सो लूज दैट स्टैमिना. करेक्ट. और ये काम करते करते जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, व्हेन यू एंटर देयर, देन देयर इज मच इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो. करेक्ट. सो आफ्टर 2019 was completed and I was in Navodaya Vidyalaya. So although it was a contextual appointment, but I enjoyed that. So it was a very joyful experience, you can say, and I enjoyed the learning. I gave what I had, and from that time I understood that ये सब होता है जो सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं, और सेंट्रल स्कूल्स में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. सो देन आई you can say made a detailed study. ओके, कि कैसे इसको क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ KVS, हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ NVS. करेक्ट. नवोदय विद्यालय का जो अलग से अपॉइंटमेंट होता है एंड केंद्रीय विद्यालय का जो अलग से अपॉइंटमेंट होता है. सो आई मेड अ डिटेल स्टडी एंड आई लर्न दैट ओके, सब्जेक्ट तो मेरा क्लियर है, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू कैन से, इन माई सब्जेक्ट दैट आई कैन डू इट. ओके, बट बाकी जो फर्स्ट पेपर है उसको ठीक ठाक करना है. सो यू ऑल्सो डू दैट थिंग. तो ऐसा होता है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलता है बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, और कितना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे सामने. तो दैट्स वाई डू नॉट नो. कितना सारा वैकेंसीज निकल रहा है आजकल, तो सब कुछ ओके. सो यूट्यूब्स के लिए, यूट्यूब जो वीडियोज़ है इसलिए हमें मिलता है, बट वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वी आर सो मच ऑफ इन्वेस्टेड इन वन थिंग कि हमें यही करना है. लाइक अभी जैसा स्टेट में बहुत दिन से अगर टीचिंग में वैकेंसीज नहीं आ रहा है, सो दूसरा कुछ देखना होगा जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू वर्क और इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ टीचर, देन दैट मीन्स यू कैन वर्क एट एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर तुम्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वेयर यू कैन वर्क एज अ टीचर. करेक्ट. उसमें अच्छा पर्सनैलिटी बनाना है, और इतना सारा लिंक्स हो जाता है, कनेक्शंस बन जाता है, जो बाद में जाके इन फ्यूचर इट विल हेल्प यू आउट. करेक्ट. तो इसके बाद मैं और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया. सो एज आई सेड दैट दिस इज़ माई 5th इंस्टीट्यूशन दैट आई एम वर्किंग हेयर. तो अभी ये तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया है उधर. करेक्ट. और फिर उसके बाद जब मैं नया इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया, सो इट वॉज अ न्यू एनवायरनमेंट. पहले पहले बहुत कुछ ऐसा लगा कि it was very difficult at the very beginning, but after that time I also learned so many things, and I also always kept myself open कि लर्निंग जो होते रहेगा, डिफ़िकल्टीज आते रहेगा, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, और बहुत कुछ सीख लेना है. सो अभी जैसा बोला जाता है कि केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल्स होते हैं या तो नवोदय विद्यालय, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. बिकॉज आई हैव फेस्ड दैट नवोदय विद्यालय में कितना प्रेशर्स होते हैं, कितना कुछ करना होता है टीचर. तो एक टीचर सिर्फ टीचिंग नहीं करता है, साथ साथ और भी कुछ काम होता है जो एज अ नेशन बिल्डिंग जो करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी. तो ये सब मुझे सीख मिला, और फिर इसके साथ साथ तैयारी तो होने लगा. और जब मुझे लगा कि तैयारी में कुछ कमी हो रहा है, एट द टाइम आई हैड टू क्विट ऑल्सो सम जॉब. ओके, फॉर द सेक ऑफ माई प्रिपरेशन. सो फिर उसके बाद 2-4 महीना इन द ईयर ऑफ 2000, इट वॉज द ईयर ऑफ 2022. सो 2-4 महीना तो एकदम पूरा प्रिपरेशन लिया फॉर द NVS एग्ज़ाम ऑल्सो, फॉर द KVS एग्ज़ाम ऑल्सो. करेक्ट. और उसके बाद ऐसा होता है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है, बिकॉज यू आर वर्किंग एज ए टीचर एंड आफ्टर दैट टाइम यू हैव क्विट योर जॉब. Okay, so you do not have any job with you, but you have the determination only with you, you have the hope only with you that you can do it, you will succeed, but only the perfect time you have to wait for. So I kept waiting, so there was nothing but to wait. So I waited.
I waited, but after that, when I found that okay, the examination is over and only that I have to wait for the result, so I again joined another institution. Okay, but I am not naming the institution here. So I joined another institution, and it was a very perfect experience for me. It's a very good experience for me because अभी जितना काम करना पड़ता है, इधर जो जो काम करना पड़ता है वो ऑलरेडी मैं करके आया हूँ. सो इसलिए ये काम करने में मुझे मुश्किल कभी नहीं लग रहा है. सो आई डो नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. सो आई ऑलवेज टेल यू दैट जो जो तुम्हें मतलब अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस मिलता है, अगर वो स्टेट के बाहर भी है, स्टेट के अंदर भी है, ओके एकदम स्टेट के कोना पर है, करेक्ट. सो इफ़ यू हैव टू गो टू द कॉर्नर ऑफ द स्टेट, देन ऑल्सो डू नॉट रिजेक्ट इट, बिकॉज दैट विल गिव यू सम एक्सपीरियंस, दैट विल गिव यू सम लर्निंग एक्सपीरियंस जो तुम्हें बाद में जाके काम आएगा. ओके अगर तुम्हारा लाइन क्लियर है, सो फर्स्ट यू मेक योर लाइन क्लियर कि तुम्हें ये करना है. फिर उसके बाद अपना जो फैसला है वो तो खुद को ही लेना है कि कब तुम जॉब करोगे, कब तुम जॉब छोड़ोगे. बिकॉज यू नो दैट दिस टाइम पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स प्रॉपरली, एंड सो मेनी कैंडिडेट्स आर देयर वेटिंग फॉर, और दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल गेट जॉब्स, बट वैकेंसीज नहीं है. ठीक है, वैकेंसीज कम है पर कंपटीशन ज़्यादा है, वी अंडरस्टैंड दैट. बट अपने से तो ये तो कर ही सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है. ऐसा ऐसा नहीं होगा कि एकदम घर के बगल में ही हमें मिल जाएगा जॉब, करेक्ट. सो नोबडी इज गोइंग टू ऑफर मी जॉब बिसाइड माई हाउस, दे विल नॉट कम टू माई हाउस. सो वी हैव टू गो एंड वी हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स. तो और साथ साथ और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं ये बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज जो आते रहेगा, चैलेंजेस जो आते रहेगा, ऑफकोर्स उसको फेस करना होगा. ऐसा नहीं होगा बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ डिजिटल एज. तो अभी सब कुछ क्लियर है हमारे सामने, सब कुछ विजिबल है, दैट नथिंग इज़ हिडन. एंड तो ये सीखते सीखते मुझे ये सीख मिला दैट हो सकता है कुछ. ओके और जो पैटर्न देखा जब एग्ज़ाम दिया तब थोड़ा कन्फिडेंट भी लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीटेट क्लियर कर चुका था इन द ईयर ऑफ 2020 और 21. तो मुझे ये लगा था कि क्योंकि टीचिंग में ही जाना है, तो इसलिए जो जो एग्ज़ाम्स होगा टीचिंग के लिए, मतलब द एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसको पास करके रखना है. बिकॉज यू डू नॉट नो व्हेन द नेसेसिटी विल कम टू यू. तो नेसेसिटी कभी भी आ सकता है, करेक्ट. तो इसलिए ये दिक्कत नहीं हुआ कि अभी जैसा केंद्रीय विद्यालय के लिए और नवोदय के लिए ईएमआरएस के जो वैकेंसी आया था, सो फॉर ऑल दिस टीचिंग एग्जाम्स यू नीड सीटेट. तो ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट्स है जिसके सीटेट नहीं है, करेक्ट. एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग. सो आई माई ऑलवेज माई एडवाइस इज to you for the college students and for the now for those students also who are now in the masters. So always crack the exams, क्रैक द एग्जाम्स. जो जो मतलब एलिजिबिलिटी एग्जाम उससे जैसे टेट हो गया, एस टेट हो गया, सी टेट हो गया, सो ऑलवेज फर्स्ट उसको क्लियर करके रखो. ओके बिकॉज उसका तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है. सो पहले क्लियर करके रखो, फिर जो जो एग्ज़ाम आएगा उसके हिसाब से विल अपीयर दैट एग्जाम, विल अपीयर फॉर द एग्जाम एंड देन विल क्रैक इट. और क्रैक करना, अभी इतना सारा मटेरियल्स हो गया है हमारे सामने, बहुत कुछ लर्निंग मटेरियल से, बहुत सारा कोर्सेस से अवेलेबल है. आई ऑल्सो टुक द हेल्प, ऑफ कोर्स आई टुक द हेल्प, बट वही क्योंकि टाइम लिमिटेड है. सुबह उठ के तुम्हें जाना होगा स्कूल, जैसा मेरे साथ हुआ है. सो वहाँ था एक्चुअली कैन टेल दैट सुबह होके व्हेन इट वाज द मॉर्निंग, देन आई हैव टू गो टू द स्कूल, अटेंड द स्कूल एंड ऑल द क्लासेस, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू कम बैक माई टू माई होम. बिकॉज होम मतलब होम तो सोचो कि आफ्टर क्लास 10th और no सॉरी आफ्टर क्लास 12th आई वॉज आउट ऑफ माई होम. तो उसके बाद से मेरा बोल सकते कि कॉलेज लाइफ से ही आई एम आउट ऑफ माई होम. ओके तो मेरा होम मतलब या तो कभी ये मेस हुआ, कभी रेंटेड हाउस. ओके तो ऐसा ही होने लगा इसके बाद से. तो फिर उसके बाद से अपना पढ़ाई, फिर साथ साथ अपना जो काम होता था. सो यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स. और ये जो तुम्हारा पीरियड है, सो इन दिस लर्निंग पीरियड, इन दिस पीरियड व्हेन यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी एलिजिबल फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यू हैव टू मैनेज मैनी थिंग्स. तो इसके बाद से जो तुम्हें लर्निंग मिलेगा, सो दैट विल नेवर फॉरगेट, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग मैन. ओके सो ऑलवेज फोकस दैट कि तुम्हें बनना है एक वन मैन आर्मी जो होता है, करेक्ट. तो वन मैन आर्मी अगर बन पाओगे, सो देयर इज नो चैलेंजेस दैट कैन हिंडर यू, दैट कैन प्रिवेंट यू. Okay, so now I am finally posted at Kendriya Vidyalaya Kuch Bihar, and I know that your good wishes are also with me. So आगे जो जो अपडेट्स होगा, और साथ साथ ये भी मैं सोच रहा हूँ कि जो जो हमारे यूट्यूबर्स सॉरी जो जो हमारे व्यूअर्स है, तो उसके लिए अभी नया नया वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा. बिकॉज नाउ आई हैव द टाइम, बिकॉज दिस टाइम वॉज वेरी डिफिकल्ट, यू नो दैट पहला स्कूल, फिर उधर से इधर आना पड़ना, मतलब फिर उधर नया जॉब ज्वाइन करना,
और उसके साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, सो ऑल दिस थिंग्स वर देयर, सो आई कुड नॉट मैनेज द टाइम, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट नाउ आई एम नाउ हियर, सो आई विल मैनेज द टाइम एंड अपलोड द वीडियोज़, रिलेटेड वीडियोज़ जो तुम्हारे लिए काम आ सकता है, सो आई विल अपलोड. ओके, एंड ऑल द बेस्ट विशेस. थैंक यू.